Bueno, Yes. voy a hablar en español, pero el video es sobre lenguajes y son 3. Urdu, que es de subcontinente en el mundo, continente Asia. Después, nuestro inglés y después, nuestro español. I will speak in English now. The language program, the language video, the language class tonight with Uncle Farooqi in his program Uncle's Talks on the YouTube. I'm going to teach you some words of Urdu, English, and Spanish because I am trying to teach you these 3 languages at the same time. It's going to help you in your travels. It's going to help you to relate better with other nations because these 3 languages cover more than half of the world. That means you're already passing for a good communicator if you know these 3 languages. Because billions of people speak these 3 languages: English, Spanish, and Urdu. All right? It's a general video, a little bit of everything. Some words, some verbs, some grammar, some celebrity phrases, and some popular words. Okay? So let's start with some words first. Then I'll give you some sentences. What comes into my mind? आसमान, उर्दू में बोल रहा हूँ, फिर अंग्रेजी में, फिर स्पेनिश में. ठीक है? ये ऑर्डर होगा. फिर वक्त मैं आपको कुछ अल्फाज बताऊंगा. Some words. Algunas palabras. Se dice algunas palabras en español. ¿Ok? आसमान, पहला लफ्ज आसमान. इंग्लिश में हो जाएगा sky, and in Spanish el cielo. Okay? El cielo. Zameen, the earth in English. La tierra, Spanish. La tierra. La tierra. ठीक है? मुल्क, उर्दू में the country. English el país, el país, el país. Spanish. बंदरगाह, the port, the seaport. बंदरगाह, the seaport in English. En español, en Spanish, el puerto, el puerto, el puerto. दरिया, उर्दू में दरिया. अंग्रेजी में the river, the river, the river. En español, en Spanish, el río, el río, el río. और आगे आ जाए. समंदर, उर्दू में, अंग्रेजी में the ocean, the ocean, the ocean. Spanish, en español, el mar, el océano. There are 2 ways to say el mar or el océano. El mar o el océano. El mar o el océano. Okay? Now, few more words. गली,
गली कूचा, गली अंग्रेजी में, in English the street, the street, the street. आपके स्पेनिश में, in español, la calle, la calle, la calle. मौसीकी उर्दू में, मौसीकी अंग्रेजी में, the music, the music, the music. In Spanish, in español, la música, la música, la música. रक्स उर्दू में, the dance. In English, the dance, the dance. El baile o la danza. In Spanish, in español, el baile, or I'm using the word or of English so you can understand, but in Spanish it's o, or equals o. El baile o la danza. El baile o la danza. El baile o la danza. Okay. Sadr उर्दू में, the president. In English, the president, the president. आ जाइए आगे स्पेनिश में, el presidente, el presidente, el presidente. Okay. कौमी असम्बली, कौमी असम्बली, कौमी असम्बली उर्दू, नेशनल असेंबली. In English, national assembly, national assembly. La asamblea nacional, la asamblea nacional, la asamblea nacional. In English, sorry, in Spanish, o se puede decir en español, la asamblea nacional. ¿De acuerdo? Kate, 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 the farm, the agricultural farm, okay, is the same, the farm or the agricultural farm. In Spanish, la finca, la finca, la finca. Zaraat, 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 उर्दू में हो गया. Agriculture, English, agriculture, agriculture, in English. In Spanish, agricultura, 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 la agricultura. Se puede agregar la. You can add la agricultura. Okay? और आगे आ जाए, फसल, 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 the crop, the crop, the crop. El fruto, el fruto, el fruto, en Spanish. O se puede decir la cosecha, la cosecha, la cosecha. El sentido es igual. El fruto means the same result of the crop. In Spanish, la cosecha o el fruto. El fruto o la cosecha. ¿De acuerdo? Agreed? राजी हैं? तो ये मैं तीनों ज़बानों में बोल गया. राजी हैं, agreed, acuerdo. De acuerdo. और आगे आ जाए. चलें इसको यहीं छोड़ देते. आज काफ़ी होगा. 12-15 लफ्ज़ आपको सिखा दिए. मैं कुछ जुमले सिखाना चाह रहा था. आपको आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी वीडियो में सिखाएंगे. बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे. ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी.
I hope you liked the video talking in Spanish. Espero que le haya gustado el video. Viewers se मुखातिब हूँ, mire el programa, trate de aprender los idiomas porque se va a beneficiar de esto. You are going to be benefited out of it. आपको आपकी मालूमात बढ़ेंगी ज़बानों के बारे में, तो आपका बड़ा फ़ायदा होगा. Foreigners के लिए, गैर मुल्कियों के लिए, a los extranjeros estoy hablando. Combine los tres idiomas. Combine the 3 languages. इन तीनों ज़बानों को मिक्स करें ताकि आपकी मालूमात बढ़ें. You improve your knowledge. Mejorar su conocimiento hablando en español ahora. Y esto es todo. Como me escucha hablando en 3 idiomas rápidamente, Urdu, inglés y español, así ustedes pueden aprender. इसी तरह आप लोग सीख सकते हैं. Like that you can learn. Okay? Languages, जिंदाबाद. Lenguajes, viva los lenguajes. उर्दू में कहेंगे ज़बानें जिंदाबाद, क्योंकि इससे हमारी दुनिया का ताल्लुक़ है और ग्लोबलाइजेशन का ताल्लुक़ है. ग्लोबलाइजेशन को ग्लोबलाइजेशन स्पेनिश, और ये दुनिया से ताल्लुक़ात को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. उर्दू में दुनियाई ताल्लुक़ात हो जाएंगे. खुदा हाफ़िज़ पाकिस्तान. थैंक यू वेरी मच. बाय नाउ.